लाइफ हो क्या? Let's see. Hmm. Boom, 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 boom. Okay, so two people are so which is not bad considering what goes on usually, and it's midweek. I'm just finding excuses to satisfy my dimag. Yeah. I'll just go through Fantasy Football Scout. एक और एक मिनट एक मिनट एक मिनट Okay, why is this not working? Okay, so mid game week has started and मुझे खुद नहीं मालूम था कि मतलब this exist unless until मेरे एक दोस्त ने मेरे को text किया. So I don't know midweek रखते भी क्यों हैं. It's pretty strange. It's really strange कि midweek क्यों ही होता है. But it's like fine. I'm just doing this to make sure that I maintain that consistency even though we both know what the results are or whatever it's going on. So for the one, hi bro, hi goat edits. So uh, midweek में I think midweek का रखा ही क्यों मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है. I mean it's December, we'll see a lot of this coming up. So it is what it is. But yeah, it's like one of those. So we'll just go through what's going on. Is someone injured? Do we have a lot of press conferences? Uh, First, we have Jensen will miss out with a hamstring injury. He sustained at the weekend. Ayer is trained. Okay. Benford, I think, has faced a lot of problems without it. Benford has suffered a lot of problems without Ayer, Christopher Ayer. मतलब they've just kept two clean sheets or one clean sheet this season, which is sad. Martinez half time में निकल गया था, तो वो एक issue है. No clear cut from Arteta on Gabriel. Gabriel will be playing with less minutes. अगर this is what you see as a failure. This is a clear example of what failure is. I'm just here to maintain consistency, and this is what we are. I hope you have reached home. I hope you have reached home, man. Or if you are not, you're watching from the cab, then वो भी ठीक है. But हाँ, text करना घर पहुँच के. Bro will be okay. Nothing more. Gary O'Neill confirmed everyone is okay. Uh, City ka, it's like pretty strange how Pep is going to deal with all of this. Johnstone is not close to returning from a foot injury. Edison is still number one. Ortega maybe continue between the sticks. I don't know Edison bench karne ka what does it make sense? Anyone worth getting or bank the transfer? I think mid game week mein it's usually banking the transfer, not thinking too much because mid game weeks just go like this. Okay, so whoever I've seen a lot of people activating their chips for this game week, but it just doesn't make sense to me. So midweeks may usually bank the transfer, but I think I'm gonna make a move. General trend is to bank a transfer. Most transferred in players Nicholas Jackson understood, Saka understood, Cunha.
I think I've already made up my mind of going against him, so I'm not going to look at him. Differentials may first one that comes up on top of my list. Abhay will be happy. That is Marcus Rashford scoring in back-to-back games. Uh, 2 goals, 1 assist. Sorry, 3 goals in last 2 games, which is pretty good. I think that Arsenal versus Man United will be a tricky game, but for long term, I think a differential pick. Rashford is a good option. Cunha keep, yeah, I think अगर आपने उसको लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, and the fixtures are definitely not bad. Give him chance for at least next 2 3 games because he has good stats among forwards. He has created the most chances, and in terms of forwards in last 3 4 game weeks, he's the best. But I've decided on going against him because I want to double up on Palmer and Nicholas Jackson. Midweeks का जैसे मैं बोल रहा था कि don't think too much about your team, don't uh, experiment too much because midweeks just go like this. मतलब you don't need to think too much about it. Uh, मेरी टीम की अगर परफॉर्मेंस देखे तो बहुत अच्छी थी लास्ट गेम वीक आई वाज रियली प्राउड मतलब मैं जिंक्स यूजुअली कर देता हूँ बट लास्ट टाइम आई वाज रियली प्राउड ऑफ माय टीम डिफेंस में हगास है बट आई वाज रियली प्राउड अबाउट माय साका ट्रांसफर I would never do Haaland. I would have never taken out Haaland, but I did that and got in Saka. And उसको कैप्टन करना was kind of worth it. इसके अलावा Embuemo again one shot in last 4 games, which is very sad for someone like Embuemo is not playing as a striker, which is also kind of surprising. Why is this happening? Brentford उसको ज़्यादा wide रख रही है, so he's not even having attempts in front of the goal. That's the sad part. Solanke missed out because उसको fever हो गया था, बुखार हो गया था. I hopefully he's back. Hopefully he's back for the next game versus Bournemouth. Uh, the first fixture is Ipswich versus आज रात के fixtures है Ipswich और Leicester और West Ham के. Leicester versus West Ham will be a good game. It will be an open game. Ipswich versus Crystal Palace. I think Ipswich will fight. Ipswich will fight. So that is a good thing. I can see a 1-0 win for Ipswich. I just think that Ipswich will win somehow. Rico Lewis is someone in my team that I'm looking to transfer out. But the value that he is bringing at 4.7 million, I'm just waiting for uh, City to somehow turn their form. And उसके बाद से I think Rico Lewis will win everybody's team because आपको आके अभी आने वाले फिक्चर्स भी थोड़े ट्रिकी हैं फॉर सिटी सेहर्स्ट पार्क जाना है नॉटिंघम फॉरेस्ट हैव लुक्ड गुड दिस सीजन United be because of the new manager. United somehow always shows up versus okay, captain for the game week. Abe just wants to get straight to the point, and I will because who else is watching, right? So, going straight to the point, I'm going with Palmer because Southampton has 2 major injuries. Howard Taylor Bellis, who got selected for the English team in this last international break, is injured. Sorry, he got suspended, and one more player is out as well. So. And Southampton looked really shaky versus Brighton. Brighton were unlucky to get a win, and I think based on how Chelsea performed in the last game week versus Aston Villa, I'm going with Palmer. Straight up, no overthinking. Maybe I can just punt and go for Nicholas Jackson, but my captaincy is right now on Palmer. I'm not gonna think too much about it. It's pretty simple for me. But if you don't have Palmer, then I'll go for Salah. Uh, because I think Saka form में है, but Salah is more like dependable. Saka बड़े games में भी perform करता है, but it's one of those big teams facing each other. So उस हिसाब से if you don't have Palmer, I think you should go for and you should go and captain Salah. But I'm not stopping you from going and captaining differentials. If you feel कि your forwards, someone like Cunha can do well versus Everton, बट एवर्टन वैसे भी स्लो खेलेगी क्लीन शीट निकालने का ट्राई करेगी सो दैट इज व्हाट एवर्टन डज so that is it. I think I have moves planned in my mind. Last game week में मेरे thoughts थे कि I would remove Gabriel, but it was all about set pieces, and I kept repeating that, and he scored. मतलब he's not gonna his minutes are gonna be sustained थोड़ा सा because UCL is coming up. I'll not be surprised if he gets benched. Midweeks का यही होता है कि a lot of rotations happen, so you have to be kind of have a heavy bench.
Agreed. New manager has showed faith in Ahmad, but what do you think? How long is this going to last? Is Garnacho going to step up yet again? Because Rashford ka place booked up because he has been scoring in last two games and it looks good. It looks what Rashford is doing right now. But I think someone like Garnacho scares the potential of Ahmad's minutes. That's the major scare of Ahmad. But yes, he's a great option as well. I think cheaper में Rashford I think is a like if you want to go differential वो अमाद कुछ ज्यादा अल्ट्रा डिफरेंशियल हो गया but I think Rashford is much more direct in front of the goal is what I feel वरना तो Bruno is the first choice Bruno सबसे पहले जाती है फिर उसके बाद if you don't have Bruno का money then go for Rashford and then तुम्हें that is a differential already then you feel कि और differential जाना है तो फिर अमाद जा सकते हो but अमाद again minutes का चीज है गानाचो का सीन है if you can tell me ki how Garnacho going to get minutes because that is what scares me about Man United. I think Man United में मैं not just the forwards I'm looking at the defense as well. Uh, Mazroi and the other fullback as well. I don't know who said, but they got substituted at 55th minute, which is kind of, hmm, I don't know. But yeah, I'm looking at United का defense. Next five fixtures, which assets perform better? Liverpool, Arsenal. Liverpool on the top of the table. Uh, देख लिवरपूल में यू हैव साला यू हैव जस्ट हैव लाइक टू थ्री ऑप्शंस आर्ने स्लॉट ने बोला है कि ट्रेंट इज नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मिनट्स he confirmed that he said that because injury is an issue and Liverpool are actually without a right back right now but I would say Liverpool just based on the form they are in but new manager bounce में हम देखें next five fixtures एक बार देख लेते हैं Arsenal they are facing Man United open. I think they should do well at home. Arsenal, Abe, what are your predictions? Because I think Arsenal will want that 3 points. They want, finally, they are in a race without City and they don't want to lose this opportunity. So I think it'll be really tough game for United. So let's coming back to your question. Man United is facing Arsenal, Nottingham Forest, Manchester City, uh, Bournemouth, Wolves, Newcastle at home. I think it's one of those. I think I'll go with Arsenal in terms of because Arsenal's defense is someone that you can back on. Jurin Timber, Gabriel, Saliba, Saka, Odegaard is back. Odegaard is going to pull strings. So in terms of both, I'm more confident on Arsenal, but in terms of United surprising us maybe in next few games, let's see. Let's see. Not good an idea right now. I had delayed. I'm rotating to see his best 11. Menu and Martinez also not. Yeah, Menu and Martinez just came back in the last game. Yeah, definitely. But it's like one of those options because a lot of managers do have Mazraoui. But I do agree. Matlab it's a wait and watch basically. Yeah, we both agree that it's still a wait and watch. United assets. Arsenal lead the win 3-5-2 is tricky prospect. They could surprise everyone, as you said. Yeah, definitely. But three at back is much more stable, but hopefully Martinez has a good game versus Man United. It's going to be a trick game, and hopefully it's not a slow game because it's a mid-game week. Hopefully we get a good uh, duel between both of them. So yeah, definitely Arsenal. I think I brought in Saka because I think next few weeks may he's gonna provide more than Haaland. So that is my reasoning on Saka. Okay. Uh, so yeah, defense may definitely have some issues and I have to rotate. I feel like rotating. Uh, Vandenberg obviously has not been doing well for me in last few game weeks. एक game week में 6 pointer दिया था. I do not expect a lot. Oh, didn't know this. I didn't know this. I just saw that they're coming back from the injury. Sorry, I didn't know this. Martis and Menu are in malab suspended. Malab it kind of doesn't matter right now. It's just because Casemiro is gonna start. Malab it's like Menu, yeah, I know, but still it doesn't matter because the coach is still figuring out. But yeah, this is a big mess. It's a Martinez is a big mess because you need that composure. Then Arsenal is gonna jump on you and Gabriel is gonna start off for sure, for sure. Huh. So defense में I have some issues and I am looking at transferring out Embuemo and the best options right now available for me that I'm looking at is Bruno Fernandes and Rashford. I just want to compare.
both of them in terms of how both of them have done in last 3 game weeks. Obviously, Bruno के starts better होंगे, but I just want to see. Let me just see after stats because Embuemo is stinking up my team because मतलब पर Aston Villa के against chance दे सकता हूँ, but it's an away game. I'm not so sure. I'm not so sure he's actually stinking up my team. Uh, let's just check Abe's team. Did he make any changes in the last? I'm second. Matlab, it's like not bad. I've climbed up. But it's like the points are so close. Matlab, I think till 750, I think people can catch up. उसके नीचे थोड़ा tough होगा. Where is Abe? Okay. Abe has made changes. He took a -4. Delete Timbo, Young के साथ थोड़ा unlucky हो गए, but it's like yeah, it happens. Saka, Bruno, Salah, Palmer. This is a dream midfield for Abe. Good changes. Forwards में stability is there. Ings को निकालना है बस. I think your only transfer two transfers I would suggest, but make one. Ings को निकालो. Ings get in forward. Get someone like Isaac भी injured हो गया, so we'll look at forwards right now. I think yeah, this is a good team. I love this for midfield. I think it's going to be a template midfield, and that is what I'm looking at. And Buemo to Bruno Fernandes is on my mind. This was Abe's team. And yes, I'm looking to transfer out to Mbuemo, and Solanke is going to start. I hope Solanke starts this game week. I hope he has recovered. Uh, let's just go through the status and see the transfers in. Transfers out. Subse most sold is Mbuemo, which justifies uh, why. Matlab, which justifies matlab, his form. Konate is out. Haaland is getting sold left, right, and center. 46%. This guy has gone from 77% to 46%. Uh, Isaac out because of injury. Solanke is out because of reactionary managers. Uh, okay. Who is getting transferred in? Von Bissaka is getting. Oh my god. Oh my god. Why are people doing this? I think jab tak the fixtures, I mean, green dekh rahe ho, but West Ham are shit as well. I'm not, मतलब you cannot. अब finally Von Bissaka सोच रहा है कि वो आगे जाके कुछ करेगा, but it's like it's kind of really funny for especially for Man United fans. João Pedro is still being bought in. Fulham के साथ it won't. I don't think Brighton will win versus Fulham because it's Fulham at home. Fulham at home are really good. Mitoma is someone, yes. Mitoma is another differential for the upcoming game weeks. And I was considering him, but injury scare hai, so I'm going to wait for one more game week. And I already have João Pedro, so why do I double up on? Matlab, it's taking a lot of risk, a lot of risk. I rather diversify. ठीक है. Kluivert and Evanson, who was that Bournemouth ka forward. I think he took 2 pens. He took 2 pens or 3 pens. Oh yeah, 3 pens in the last game week. And Bournemouth mein Semenyo is taking the most shots. Matlab, he has the most shots amongst forwards, but he's not getting any returns. Uh, Kluivert, no, I'm not looking at him right now. Pedro Porro still being bought, which is, I don't know. I want. Oh yeah, Chelsea defense is something that you can consider. Definitely, I'm looking at it. I'm not complaining, but चेल्सी में स्टेबिलिटी नहीं है ये हम दोनों को मालूम है कुकुरेला को आई डोंट I mean he's Cucurella is like a really complete fullback of what we have seen this season at least. He has been doing well in the defense, overlaps, crosses, final third passes, pre-assist. Cucurella has done well. Another La Masia graduate who went to Getafe from us and scored against us as well in La Liga and now obviously has been doing well. Did well in Euros. या तो या आई थिंक हाँ उसके बाद हम रैशफोर्ड को भी देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर रैशफोर्ड वर्सेस आर्सेनल आई थिंक क्या मतलब रैशफोर्ड यूज्ड टू शो अप इन दीस काइंड ऑफ गेम्स होपफुली वी सी I'll be really hyped up if Rashford comes back to his form. So I think main concern about this game week okay Hetafe. What did I say? Getafe I said. What did I say? Hetafe. Okay. थैंक यू अब तू मेरे को सही बता रहा है गलत बता रहा है कि वो अब चल ठीक है हे टफ है याद रखूंगा ठीक है तो डिफेंस में आई थिंक हेलो जी हेलो हेलो जी नोएडा ऑल बॉयज फ्रॉम नोएडा भाई नोएडा चले गया बताओ कल नोएडा चले गया रात में भाई नोएडा में कुछ खाने के जगह बताइए छोड़ भाड़ में जाए एफपीएल भाड़ में जाए क्योंकि वैसे भी रैंक नीचे होने ही वाली है तो क्या ही फर्क पड़ता है
मुझे बताओ। आई नो, मैंने देखा। लास्ट गेम वीक चुत गई, यस आई नो, मैंने तेरा परफॉर्मेंस देखा। बट ब्रो, यू डिडंट इवन डिजर्व टू बी देयर अप, उतना यू डिडंट डिजर्व टू बी एट टॉप। बिकॉज तूने इतने सारे, तूने 2 गेम वीक्स मिस किए हैं चेंजेस करना, एंड हाउ कैन यू स्टे एट टॉप लाइक दैट? डोंट बी अंश। ठीक है, खाने के लिए डस्ट है, अपना गुर साथ में लाए। व्हाट डज गुर मीन? व्हाट डज गुर मीन? ओके। हाँ, तो मेरे को डिफेंडर्स चाहिए। आई एम लुकिंग एट चेल्सी डिफेंस। ओके, नाइस नाइस नाइस, कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। ओके, तो डिफेंस में आई थिंक, हाँ, मेजर कंसर्न्स अबाउट दिस गेम वीक, सबसे बड़ा कंसर्न है कि सुयश का बहुत छोटा है। दूसरा कंसर्न ये है कि रोटेशंस होने वाले हैं। ठीक है, रोटेशंस होने वाले हैं, एंड उसके वजह से मेरी टीम की वाट लगने वाली है। गैब्रियल माइट स्टार्ट जस्ट बिकॉज इट्स मैन यूनाइटेड। इट्स मैन यूनाइटेड। ओके, एक मिनट रुक जा, कॉल क्यों करें? हाँ, इट्स मैन यूनाइटेड, तो गैब्रियल विल स्टार्ट। रिको लुइस विल स्टार्ट। रिको लुइस को स्टार्ट कर सकता हूँ वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, बट दीज एल्स डोंट लुक गुड। आई डोंट एक्सपेक्ट सिटी टू कीप क्लीन शीट्स। हेलो आशुतोष भाई, हेलो 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 हेलो, आपका कैसा क्या गेम वीक, आप बताइए। हालांकि जेनेटिक, जेनिटल का, ओके ओके ओके, वियर्ड वियर्ड वियर्ड, और कॉमेडी। हाँ, तो आप मेरे को बताओ कि शुड आई जस्ट होल्ड एम्बोएमो फॉर वन मोर गेम वीक और नॉट, बिकॉज इसके लक्षण सही नहीं लग रहे हैं मुझे। तो मुझे बताइए कि हम एम्बोएमो का क्या करें, बिकॉज लास्ट 2 गेम वीक से तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। दो नहीं, मतलब 3-4 गेम वीक से। एंड सुयश का कैप्टन था, विच इज काइंड ऑफ फनी। आई थिंक एट होम वर्सेस लेस्टर यू थॉट कि तेरे को एक पेन मिल जाएगी। सुयश, हु आर यू कैप्टनिंग? Who are you captaining this game week? Guys, tell me your captains because that will be kind of interesting. मेरा captaincy is on Palmer because Howard Taylor Bell is injured at Southampton का, and then one more defender is injured. So one more defender is injured, so I'm going for Palmer. Straightforward, not too much overthinking. बस मैं लॉक करके रखा है जब से साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन वर अनलकी टू, मतलब दे वर लकी टू गेट अ ड्रॉ, सॉरी अनलकी नहीं, दे वर लकी टू गेट अ ड्रॉ वर्सेस ब्राइटन। खोल के रखा हुआ था, सो आई डोंट थिंक चेल्सी विल फेस अ प्रॉब्लम इन डूइंग दैट। अच्छा, पता नहीं, कॉलेज चालू हो गया, देखा ही नहीं आज टाइम मिला तो आपकी स्ट्रीम देखी। या एक्चुअली पता है, मेरे को भी नहीं मालूम था आज डेडलाइन है, दैट्स द फनी पार्ट। मेरे को अर्जुन ने टेक्स्ट किया कि आज डेडलाइन है, एंड आई जस्ट, मैंने उस टाइम स्ट्रीम किया, मुझे मालूम नहीं था कि आज डेडलाइन है। ओके ओके ओके, सुयश, डू दैट, प्लीज डू दैट, यू नीड इट। एम्बोमो के पोजीशन पे शेड खेला, हैट्रिक प्लस असिस्ट। फॉर सम रीजन एम्बोमो वाज प्लेइंग विंग बैक वर्सेस लेस्टर, but you should have seen 3 games before that. Now he had no shots on target. So why did you captain him? Who to Ben, Semenyo or Bruno? Bro, this will be a tough one. This will be a tough one because United is not gonna uh, play slow. They are not gonna fall back and play slow. I think respond karegi. I just think you should start Bruno just because of the fact that he has much more potential to get pens and that X factor of scoring bangers from anywhere. सो आई स्टार्ट ब्रूनो। ब्रूनो की तरफ मैं देख भी रहा हूँ लाने के लिए। सो यस, उसके अलावा डिफेंस में एज आई सेड आई एम लुकिंग एट चेल्सी। चेल्सी में आई थिंक आई विल रिमूव हावर्ड टिलर पेलिस, एंड आई एम आल्सो टेकिंग आउट एम्बोएमो। फॉर दिस आई थिंक आई कैन गेट रैशफोर्ड। रैशफोर्ड, अगर मैं ब्रूनो देखता हूँ तो मेरे पास कितने पैसे बच रहे हैं, लेट्स जस्ट सी। मेरे को ब्रूनो हटा के कितने पैसे, 3.8, नॉट गुड नॉट गुड। वापस ब्रूनो आप जाइए घर। रैशफोर्ड की तरफ क्या मैं देख सकता हूँ? 6.9, 69 डजंट लुक गुड, डजंट साउंड गुड। बेसिकली मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरे साथ होने वाला है, which doesn't make sense, right? आई मीन भाई, मैंने अभी आज चेक किया, सुनो सुनो, ये छोड़ो, एफपीएल भाड़ में जाए, एफपीएल भाड़ में जाए। मैंने आज चेक किया, मेरा वेट 72 kgs है। मेरे को लगा मेरा अराउंड 76 होगा। आई मीन दैट्स समथिंग दैट सबको याद रखना चाहिए। पता नहीं क्यों याद रखना चाहिए, पर रखना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, पर मेरा एक्चुअली कम हो रहा था। इसका मतलब है कि मैं आज कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ। स्पॉन्सर्ड बाय सुयश सुधाकर, थैंक यू। हाँ, आई 4 फी ट्रांसफर्स। भाई इतने फी ट्रांसफर्स का आप क्या करोगे? क्या करोगे?
कैप्टन साला और पामर, फॉर मी पामर। आप अगर अभी आए हो तो आपको रीजन फिर से बता देता हूं। आई एम गोइंग टू कैप्टन पामर बिकॉज साउथहैम्पटन के दो प्लेयर्स आर, वन इज इंजर्ड एंड वन इज सस्पेंडेड। वन मेन प्लेयर ऑफ देम दैट इज हावर्ड टेलर बेलिस इज सस्पेंडेड फॉर वर्सेस आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, एंड दूसरा उनका प्लेयर है डाउन्स करके या फिर कोई तो है, वो इंजर्ड है। सो साउथहैम्पटन वर लाइक रियली ओपन वर्सेस ब्राइटन। अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको मालूम होगा। तो इसलिए इट्स लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक पामर एंड निकोलस जैक्सन। चेल्सी इन जनरल डिड वेल वर्सेस एस्टन विला, 3-0 win, a very convincing win. So I expect them to do well. बट हाँ, रोटेशन हो सकते हैं तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। रोटेशंस बहुत भर भर के होने वाले हैं। बस आपको ये चीज याद दिखा दूं कि बेंच को ऑर्डर अच्छे से कर लो, वाइस कैप्टन अच्छे से चुन लो, बिकॉज रोटेशंस हो सकते हैं, रोटेशंस भर भर के हो सकते हैं। या आप स्टार्ट पैड करना तो उसको आता ही है। हालैंड का रिप्लेसमेंट आई थिंक आपके स्क्रीन में आप देख सकते हो, जाओ पेड्रो, सोलांके एंड जैक्सन। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरवर्ड का रिप्लेसमेंट फॉर हालैंड वाज कूनिया। मैंने कूनिया को नहीं लिया बिकॉज आई जस्ट प्रिफर सोलांके एंड जैक्सन ओवर हिम। बट कूनिया इज देयर, क्रिस वुड इज देयर हु हैज बीन लाइक वेरी कंसिस्टेंट। बट हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट आई एम गोइंग विद साला बिकॉज पामर माइट कम आउट सून। और देख, पामर सिर्फ प्रीमियर लीग खेलता है, सिर्फ प्रीमियर लीग खेलता है। एंड हु इज साला प्लेइंग? आई थिंक रोटेशंस भर भर के होने वाले हैं। इवन योर मेन प्लेयर्स माइट गेट लेस मिनट्स, मतलब 60-70 मिनट्स करके बाहर आने वाले हैं। तो पोटेंशियल, यस, आई वोंट से साला इज अ बैड पिक, नॉट एट ऑल। बेस्ट प्लेयर इन द लीग राइट नाउ, प्रॉब्ली बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मच्छर मार दिया। केडी भी बढ़ा के रखनी है। Solanke or Jackson? Solanke, I'll say Jackson. If you're buying someone right now, I'd say Jackson. How do you fit him in? You have to remove Haaland, या फिर अपने बेंच में जो प्लेयर्स हैं उनको बेचो, चीप प्लेयर्स खरीदो, एकदम बकवास प्लेयर खरीदो ताकि तुम्हारे फंड्स आए बैंक में। ओके, लेट्स जस्ट चेक दिस गाइस टीम। इफ अपने अपने लोगों के, आपके अगर टीम है तो उसका कोड शेयर कर सकते हो, आई कैन व्यू। My OR is right now at 240k. It was 240k from 400k to 240k. Thank God कैप्टन किया मैंने साका को, वरना वाट लग जाती। It was actually around 160k. साला ने जैसे ही गोल मारा, एक गोल मारा, 240k, मतलब ओनरशिप साला की बहुत हाई है। सो यस, आई एम गोइंग अगेंस्ट साला, मतलब वो मैं रिस्क ले रहा हूं। सो माई रैंक इज राइट नाउ 240k। टेल मी योर रैंक, मतलब इफ यू हैव जॉइंड आवर लीग और नॉट, बिकॉज मैं वहां पे आपकी रैंक देख सकता हूँ, बट आई एम गेसिंग योर न्यू ईयर, सो डू लेट मी नो योर रैंक्स। आप अपने रैंक्स बता दो। हाँ, मैं टीम देख रहा हूँ। 236 आगे क्या है? 7445 7445 62 points. Okay. Colwell. Oh, great. I'm looking at Chelsea defense right now. This is a good one. Midfield में Madison. Okay. McNeil को हटाना पड़ेगा. Rogers को खिलाओ. I think you have to. Everyone just has to. I think forward सही है. Haaland को हटाओ. Your 4 free transfers. Get one of the premiums. Get. एक मिनट, ये लोड क्यों नहीं हो रहा? अच्छा. Get one of the premiums. Get either Bruno, get Saka, get Palmer, get Salah. ये 4 प्रीमियम्स को अपनी टीम में लाना शुरू कर दो, बिकॉज इनकी ओनरशिप्स बढ़ने वाली है। आई एम एट 16k राइट नाउ। oh wow, 16k तो मतलब you'll be on top of a league which is pretty good, which is actually pretty good. I hope you maintain it, maintain करना उस रैंक में। I was there, and I was there few seasons back, and it's like really tough to stay at that rank. और लिंक आपको मिल जाएगा मेरे जस्ट डिस्क्रिप्शन में। यूल गेट अ इंस्टा का लिंक। इंस्टा में आपको पिंड पोस्ट होगा, वहां पे आपको लीग कोड मिल जाएगा। व्हाट्स योर, मतलब कितनी बार खेल चुके हो वो बताओ मुझे आप। आर यू अ रेगुलर प्लेयर, आर यू अ न्यू प्लेयर? 222, बिकॉज देन आई विल नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर यू आर। 0562, इज दिस योर टीम? कंफर्म कर दो एक बार। आई वाज एट 8k बट देन कैप्टन, ओ या, मतलब इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट साला ऑलवेज काइंड ऑफ backfires your rank, but it's fine. 2220562, okay. Cells, okay. To Anzabe, I won't blame you for starting him because many people were starting Greaves. Aitnuri, okay. Pedro Porro को, I think Pedro Porro is थोड़ा overhyped. हाँ, उसका ये भी होता है कि he has a attacking threat,
Always he has an attacking threat, but आने वाले time में Bournemouth away not gonna be easy fixture considering what Spurs form is, and then Chelsea, Southampton, Chelsea के against it will be tough. Liverpool आने वाली है, so I'm not sure you should keep Pedro Porro. अभी के लिए रख सकते हो. Johnson, Palmer. Okay, Johnson. Wow, what a good. I mean, how do you expect him to start? Madam, that's a really good move. But I would not buy him. But it's like kudos to you. Kudos to you for going against him. Going with him, sorry. And then Saka, Mbuemo Salah, João Pedro, Cunha, Raul Jimenez. Okay, Raul Jimenez is facing Brighton at home, so you can probably start him. Oh, it's a good team. I mean, it's a good team. I think defense में issues हैं, but I won't recommend defense में इतना इतना movement करने का. It's a midweek, guys. Whoever have joined in midweek में ज़्यादा transfers नहीं करने चाहिए unless they are essentials, because midweek ऐसे निकल जाता है, ऐसे ऐसे. तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. Just bank your transfers as much as possible, especially defense में, because there are not many options. अगर मैं आपको अभी fixtures में जाके डिफेंस में दिखाऊं तो आर्सेनल का एक डिफेंडर सबके पास है. होपफुली एस्टन विला का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, सो आई वुड नॉट लुक एट देम. ब्राइटन हाई लाइन खेलती है. चेल्सी अनस्टेबल है. उसके अलावा रेड फ्लैग्स. इप्सविच प्रमोटेड टीम है. इसके अलावा यूनाइटेड आर्सेनल सिटी को खेल रही है. वेस्ट हैम आई डोंट नो, द मैनेजर पता नहीं कब सैक होगा. उसके बाद वुल्व्स में आइट नूरी सबके पास है. सो डिफेंस में except Chelsea, which is also an unstable defense, there are no options. So just bank your transfer. जिसको जो भी बेंच में है उसको खिलाओ. बेंच को अच्छे से सेट करो. वाइस कैप्टन अच्छे से सेट करो. मेक श्योर, बिकॉज रोटेशंस होने वाले हैं. मिड वीक में रोटेशंस होते हैं. एंड अभी डिफेंस सॉरी दिसंबर में बहुत सारे फिक्चर्स होने वाले हैं. यूसीएल आने वाला है. सो प्लेयर्स आर गोइंग टू बी बेंच्ड. मेन प्लेयर्स आर गोइंग टू बी बेंच्ड. सो आपको कैप्टनसी भी उस हिसाब से सोचनी पड़ती है. बट आई थिंक पामर इज गोना प्ले, बिकॉज पामर वैसे भी बहुत कम मतलब ही प्लेज ही मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में, एक कॉम्पिटिशन में तो उसका नाम ही नहीं डाला है. Athletic walk, yes, Rahul is here. Rahul, guys, an introduction as always. He's our athletic representative, Manchester City का. Manchester. Okay, roll to reaction. Yeah, definitely a good move. A good move. Hopefully, but इसका बस एक प्रॉब्लम है. I also have Jackson in my team, as you can see. इसका बस एक प्रॉब्लम है कि जैक्सन को वो रोटेट कर सकता है with Nkuku because midweek है. But I don't see that happening. But I'm just saying it's something that I can happen. But yeah, Jackson is a really good move. हालैंड हटाओ प्लीज. हालैंड हटाओ. सिंपल रीजन है हालैंड हटाने का, मैं तुम्हें बता रहा हूं. अगर आप 15 मिलियन का प्लेयर अपने टीम में रख रहे हो और उसको आप कैप्टन नहीं कर रहे, तो हाउ आर यू मैक्सिमाइजिंग इट्स पोटेंशियल? एज सिंपल एज दैट. एज सिंपल एज दैट. है ना? अगर आप 15 मिलियन प्लेयर को ले रहे हो, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, ही इज नॉट डूइंग वेल, नॉट इन ग्रेट फॉर्म. इट्स नॉट दैट ही वोंट स्कोर. कभी भी आके हैट्रिक पेल सकता है वो. बट इट्स अबाउट यू आर नॉट गोना कैप्टन हिम. सो व्हाट्स द पॉइंट? भैया प्लीज चेक, आई हैव एग्जाम टुमारो. ओके, एग्जाम वालों को प्रेफरेंस देते हैं. एग्जाम 10799 10799. अरे ऊपर चला गया. 717. ओके, 69 पॉइंट्स. पिकफोर्ड, पेड्रो पोरो, सलीबा, आईना के फिक्चर्स देख लो मैं एक बार. मैनचेस्टर सिटी, ओ माय गॉड, आईना को निकाल सकते हो. गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर, अगर आपको स्टिल अगर डिफेंस में ऑप्शन चाहिए, सो आई वुड से गो फॉर डबल डिफेंस ऑफ आर्सेनल, बिकॉज आने वाले टाइम में आर्सेनल की टीम वापस इंजरीज से आ रही है, तो दे विल कलेक्ट अ लॉट ऑफ, दे आर गोइंग टू मेंटेन, इवन दो वो यूनाइटेड को खेल रही है, मे बी दे विल कंसीड, बट आने वाले नेक्स्ट 5-6 फिक्चर्स में आर्सेनल डिफेंस इज गोना डू वेल. भाई मैंने तेरे को बताया तो, हालैंड को निकालो, प्रीमियम्स को लाओ, ब्रूनो, साला, साका या पावर में से किसी को ला. ठीक है? सो वही मैं बोल रहा हूँ. हाँ, तो दिस इज ये अर्जुन शर्मा. अच्छा, अर्जुन के, ओके रुक जा. हाँ, यहाँ पे आई थिंक मिडफील्ड इज गुड. वाइस गोमेज हियर. गोमेज को हटाओ. सोलांकी को स्टार्ट करो. कोर्केस को फर्स्ट बेंच डालो. नहीं, फर्स्ट बेंच यंग को डालो. स्टार्ट सोलांके, बेंच जाओ गोमेज. Midfield, I think you should roll your transfer, or either go for a Chelsea defender or a Arsenal defender. Go for Julian Timber because Ben White is injured and is going to be out for a while. Lunga, yes, exactly. I think that's the plan of everyone, to get Haaland back in 18 to 22 game week. Abhi ke liye, I'm just stuffing my midfield with premiums. I'm removing Madison, Haaland, McNeil, Konate, Rogers for Salah, Saka, Clovert, Welbeck, and Wan-Bissaka.
वॉन बिसाका की जगह, हाँ आई थिंक इट इज नॉट बैड, बट आई थिंक गो फॉर अ चीप चीप डिफेंडर्स। तेरे पास ऑलरेडी डिफेंडर्स हैं, तो तू इतने सारे डिफेंडर्स को बेंच में रख के क्या करेगा? तू वैसे भी उनको नहीं खिलाएगा, तो बेंच में पॉइंट्स आएंगे। तो घटिया चीप डिफेंडर्स ले ले, बाकी सब अच्छे हैं, बाकी सब ट्रांसफर्स अच्छे हैं। Didn't know there were any Indian FPL creators great job subscribe. Thanks, bro. I mean, there are. I mean, there are. Even I'm. It's not that I'm the one who's only doing it, but I'm like grateful. Thank you guys. Uh, एंजो फर्नांडिस स्टार्ट करूं? कर दो, मतलब ही इज लाइक आफ्टर डाइवोर्स ऑफ एंजो फर्नांडिस ही इज काइंड ऑफ डूइंग वेल इन लाइफ एंड मतलब प्रोफेशनली इज काइंड ऑफ डूइंग वेल। ही इज लाइक 7 गोल्स एंड असिस्ट। स्टार्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, साउथहैम्पटन है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अभी आप ट्रांसफर्स मत करो, ज्यादा ट्रांसफर्स करने की जरूरत नहीं है। तो unless you want to remove someone like Haaland, which I would remove. If you're looking for defense, it's pretty clear. Defense है, I'm saying go for double. Arsenal defense में double up करो और plan to do it. अगर पैसे नहीं है तो प्लान करो कि नेक्स्ट वीक में हम कैसे कर सकते हैं, या फिर आर्सेनल डिफेंस या फिर गेट अ चेल्सी डिफेंडर में भी, बिकॉज इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है अभी। मैं आपको ब्रेंटफोर्ड बोलूंगा, बट ब्रेंटफोर्ड इज कंसीडिंग आउटराइट एवरीवेयर। Yeah, I know exactly. I understand the pain. I understand the pain. Uh, ओके राहुल, यस राहुल। राहुल वाज राहुल ने अपना सिटी का गम, मतलब गम क्या बोलते हैं, अभी मेरे को हिंदी भी नहीं आती है, गम मिटाने के लिए वो गया है श्रीलंका। श्रीलंका चला गया राहुल। वापस श्रीलंका में क्या कर रहा था तू? आई मीन भाई साथ में लेकर चलो यार, अकेले अकेले जा रहे हो। टेक वीसा और वेलबेक, नीदर। आई विल से गो फॉर जाओ पेड्रो। अगर आपको ब्राइटन में से जाना है तो जाओ पेड्रो। फॉरवर्ड्स में आप देख रहे हो तो लेट्स जस्ट सी, लेट्स जस्ट सी फॉरवर्ड्स। ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ guys। 8 minute left, 8 minutes left for the deadline, so lock in your teams। make sure कि आप लॉक इन करो। फॉरवर्ड्स में देख ऑप्शंस यहाँ पे, निकोलस जैक्सन, कूनिया, जाओ पेड्रो, वुड, वीसा आई एम नॉट श्योर, स्ट्रैंड लार्सन। आई थिंक बहुत सारे लोग ने इसको हटाकर जाओ पेड्रो लिया है, बट इसके फिक्चर्स आप देख सकते हो। वैल्यू फॉर मनी की बात करें, वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो स्ट्रैंड लार्सन इज नॉट बैड। इट्स नॉट सम, मतलब ही समवन दैट यू कैन पंट ऑन फॉर श्योर। डिफरेंशियल वुड के लिए टफ होने वाला है, बट वुड इज समवन दैट आई वुड होल्ड ऑन टू, आई वुड नॉट बाय। अगर मेरे पास होता वुड तो मैं उसको, आई मीन मेरे पास वुड है, समझ रहा, समझ रहे वुड, समझ रहा। या गो, अच्छा यू कैप्टन इन साला, ओके गो विद इट, गो विद इट भाई। जय श्री राम, करो जो भी करना है। हाँ तो गाइस लॉक इन योर टीम्स बिटवीन 4। ओके डी लैप, वाओ डी लैप भी है, डी लैप भी आपके ऑप्शंस में। इन ऑल ऑफ दीज आई वुड से जाओ पेड्रो, गो विद जाओ पेड्रो। ही इज गोइंग, guys he's captaining Salah। what are your captains for this game week? because आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 7 मिनट ही बाकी हैं। let me just check on Twitter, let me just check on Twitter if have some league news फॉर द फर्स्ट गेम वीक। आई थिंक किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक इप्सविच के प्लेयर्स हैं या फिर एजे के प्लेयर्स, किसी मतलब क्रिस्टल पैलेस के कोई प्लेयर्स नहीं होंगे। लेस्टर के आई थिंक जस्टिन हो सकता है थोड़े लोगों के पास। वेस्ट हैम में डिफेंस हो सकता है, या फिर बोवन। ओ या बोवन की बात करना हम भूल गए। बोवन, आई थिंक बोवन तभी हम ले सकते हैं, ऐसे नहीं बोवन स्कोर करेगा, बट आई थिंक इट्स मोर बेटर कि मैनेजर चेंज हो, मैनेजर बाउंस हो, तब हम बोवन के ऊपर कूदे। बट हाँ बोवन के फिक्चर्स अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। होपफुली ही डज वेल इन द नेक्स्ट 2 गेम वीक्स। ही हैज बीन ऑन माय he has been on my watch list। जय श्री राम, यस अलाउ अकबर, डेफिनेटली। पामर कैप्टन, इजी डिसीजन, या डेफिनेट। मैं तो ओवर थिंक नहीं कर रहा, और जब मैं ओवर थिंक मतलब मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो कुछ नहीं होता है। होपफुली ज्यादा, लेट्स जस्ट होप कि इस गेम वीक में ज्यादा रोटेशंस ना हो। दैट इज व्हाट वी शुड प्रे फॉर, बिकॉज मेरे को लग रहा है रोटेशंस होने वाले हैं, वही मेरे को डर है। मैं अपनी टीम में आता हूँ एक बार, मेरे को हाँ एक बार इधर देख लेता हूँ। let's just see if there is any let's just see if there is any news, लीग न्यूज कुछ दिख रहा है। वाडी, वाडी स्टार्टिंग, और कुछ दिख रहा है हमें। बोवन की तरफ क्या मैं देख सकता हूँ? एम्बोएमो टू बोवन, कैन आई डू एम्बोएमो टू बोवन और इज इट जस्ट टू रिएक्शनरी? लेट मी जस्ट गो योर एंड जस्ट स्टार्ट्स देख लेता हूँ 5 मिनट पहले। फॉर मिडफील्ड ढूंढ रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड्स भी हाँ मिडफील्ड में देख रहा हूँ। एंड लास्ट 3 गेम वीक्स में
लास्ट 4 गेम वीक्स कर लेते हैं। मिडफील्ड में सबसे ज्यादा लेट्स टिक ब्रूनो फर्नांडिस टिक करता हूँ। एक मिनट, ऑप्शंस में हम बोवन करते हैं बिकॉज आई डोंट वांट एम्बुएमो इन माय टीम। कुडुस इज अ बेटर एफपीएल एसेट दैन बोवन, बट कुडुस स्टार्ट नहीं कर रहा ना उतना रेगुलरली। ही हैज बीन सस्पेंडेड, अभी तक सस्पेंडेड था। आई डोंट नो लास्ट मैच में उसने खेला है कि नहीं, मैंने देखा नहीं। मैंने बस पिलते हुए देखा है पिलते हुए देखा, तो पता नहीं। आई डोंट नो व्हाट इज कुडुस गेटिंग, इज गोना गेट टाइम मिनट्स और नॉट। बोवन, राशि। Okay, let's just see starts of these three players. So I have Bruno Fernandes, Rashford, and Bowens in last 4 game weeks. Key passes सबसे ज्यादा ब्रूनो फर्नांडिस के, शॉट्स सबसे ज्यादा ब्रूनो फर्नांडिस के, बिग चांसेस क्रिएटर सबसे ज्यादा ब्रूनो फर्नांडिस के, XGI सबसे ज्यादा। It's a tough choice because I want to get rid of Mbuemo because I think बहुत issue cause कर रहा है। Do I have a money for Bruno? I don't even have money for Bruno. I can get him because I can remove रैंक रीसेट करने का तरीका बताओ। रैंक रीसेट करने का मेरा पता है क्या होता है, आपको सिंपल 3 मिनट बाकी है, पर मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए आता हूँ। मैं आपको ज्ञान देता हूँ 2 मिनट का, ठीक है? फिर मैं अपने मूव्स करूंगा। ज्ञान देता हूँ, जब भी आपका बहुत ही गंदा वीक गया हुआ या फिर बहुत ही गंदी रैंक है, सिंपल है, साला को कैप्टन करो, भाड़ में जाए ट्रांसफर्स, भाड़ में जाए ट्रांसफर्स, रोल करो ट्रांसफर्स, साला को कैप्टन करो, सो जाओ, सो जाओ, बस। Sells या Flecken, both are shit for this game week, but I'll say, I'll say Flecken. मिटोमा या कोई मिड ले सकता है। ओके वेट, 1 मिनट रुक जा भाई, रुक जा। आ, बाखुदा तुम हो। हर क्यों कर रहा हूँ मैं? लुइस को बेच के मैं किसको ले सकता हूँ? Is this me being so मतलब dumb again? मतलब मैं जानता हूँ, या साला एंड इंशाल्लाह ऑलवेज, मतलब व्हेन यू आर हैविंग अ शिट वीक जस्ट साला एंड इंशाल्लाह रोल द ट्रांसफर्स। जितनी भी गंदी टीम हो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेट मी जस्ट सी डिलीट कितने का है, 5 मिलियन का है। डिलीट के फिक्चर्स कैसे है? गंद। हम आते हैं अभी, वर्जिन वैंडाइक तो नहीं ले रहा मैं। कुकुरेला 5 का है, बट उसके कोलविल देख सकता हूँ मैं। Southampton away, Brentford at home, not bad for Chelsea. Uh, I don't know. Let's just roll for this game week. नहीं यार, एम्बोएमो हटाना है यार, एम्बोएमो की सूरत नहीं अच्छी लग रही। बोवन देखता हूँ मैं, बोवन कैसा है? लेस्टर, वुल्व्स, बॉर्नमथ। Should I get in Bowen? Should I get in Bowen? Yes or no? Should I get in Bowen? जल्दी बताओ, 1 मिनट है, 1 मिनट है, माशाल्लाह इंशाल्लाह। बोवन, 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 बोवन। कोई और ऑप्शन? अरे माखन चोर, अरे क्या? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, बोन ले आता हूँ, बोन ले आता हूँ। बोवन, बोवन डन। सेव ट्रांसफर ब्रो, इट्स एम्बुएमो। लेस्टर, सब नो बोल रहे हैं यार, सब सब गंदो भाई, सब कोई नहीं चाहता मेरी, सब तड़पते हैं मेरी सक्सेस देख के। 9 लोग सब भाई, लाइक कर दो जो भी 9 लोग हैं, पर छोड़ो चलो, सब बोल ही रहे हैं तो रोल करते हैं। रोल करूँ क्या? आह, या आई नो, चलो ठीक है, आई जस्ट रोल। आई एम स्टार्टिंग रिको लुइस, भाड़ में जाए। चलो, लेट्स जस्ट रोल फॉर दिस गेम वीक। होपफुली साला मेरी रैंक को कुछ ना करे। गाइस, लॉक इन योर टीम, लॉक इन योर टीम्स, लॉक इन योर। भाई तू उल्टा, अब एम्बुएमो आउट बोला है। नहीं नहीं नहीं, सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ लिसन टू मी। नाउ नाउ यू आर करेक्ट, ओके, डेडलाइन हैज पास्ड। पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप क्यों सही हो। आप सही क्यों हो? क्योंकि इस बंदे ने बोल रहा है कि एम्बुएमो आउट करो। जब ये बोलता है ना, उसका उल्टा ही होता है। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। सो सुयश से बच के रहना, जब भी ये कोई प्लेयर को ले रहा है ना, तो उसके उल्टा जाओ, हमेशा उल्टा। भाई अभी हो गया, डेडलाइन हो गया, डेडलाइन हो गया। आई वुड से बोथ आर ग्रेट। आई थिंक तेरा दोनों में से कोई भी लग गया होगा ना, तो बोथ आर ग्रेट, बिकॉज आई थिंक जैक्सन, जैक्सन इज अ ग्रेट डिफरेंशियल, ग्रेट ग्रेट डिफरेंशियल। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास जैक्सन नहीं है टीम में।
आई थिंक ब्रूनो चाहिए था मेरे को टीम में यार, ब्रूनो चाहिए था, बट इट्स फाइन, चलो। I'll have 3 free transfers for the next game week. Hopefully, more time to think about मतलब more positions. I think आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग वाइल्ड कार्ड भी एक्टिवेट करने वाले हैं, तो we'll मतलब more time to think. Let's just deadline has passed ना अभी, I think deadline, हाँ deadline has passed. So let's just quickly go and do fantasy challenge करने क्या बाद में करते हैं. Let's just do fixtures में जाके let's just do predictions कर लेते हैं सबसे पहले. भाई जो भी है लाइक कर दो यार, जो भी जिंदा है. नो कंप्लेंट्स या जैक्सन, इट्स लाइक अगर आप उसके साथ बहुत पहले से गए हो ना, मतलब मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता था बिकॉज आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट ही वाज गेटिंग रोटेटेड. मेरे को बस दूसरे ऑप्शंस बेटर लग रहे थे. आई वेंट विद सोलांके ओवर हिम एंड एक गेम वीक में सोलांके ने got a brace and an assist which was pretty good as well. But हाँ, I mean Jackson right now, yeah, definitely he's getting starts. मिनट्स का इशू, बट ठीक है. इप्सविच वर्सेस क्रिस्टल पैलेस has not been doing well. Predictions करते हैं and then खत्म करते हैं. और Ipswich versus Crystal Palace not doing well. Ipswich showing some courage, but I think home में है, Ipswich should get a win. I think 1-0 win for Ipswich today. रात में एक मतलब 3 बजे तक हम देखेंगे गंदा मैच. क्यों देखेंगे ये मत पूछो, बट देखेंगे. फिर आ जाते हैं लेस्टर वर्सेस वेस्ट हैम. आई थिंक लेस्टर से अगर हार जाएगी ना वेस्ट हैम, तो बहुत ही गंदा होगा, बहुत ही गंदा होगा. 0-0. आई मीन इट्स एन अर्ली किक ऑफ, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग योर मतलब आई थिंक गोल्स होंगे. लेस्टर के गेम में गोल्स होते हैं यार. लेस्टर इतनी भी स्टेबल नहीं है. और आज 3 या मतलब सुयश जिसको भी लेता है उसका ऑपोजिट होता है, तो या आई थिंक, बट आई थिंक इप्सविच आई थिंक विल गिव अ गुड शो. आई थिंक विल गिव अ गुड शो फॉर फैंस. होम गेम ऐसे ऐसे फिक्चर्स में आई थिंक ही विल डू वेल. वेस्ट हैम की बात कर रहे थे. आई थिंक दिस विल बी अ 2-2. आई विल गो विद 2-2. लेस्टर 2, वेस्ट हैम 2. अच्छा फिक्चर होगा ये, अच्छा ये देखने लायक होगा. 3:45 तक नहीं देखने वाला मैं देखूंगा. पर थर्सडे फिर आ जाते हैं यार. मिडवीक का तुम्हें क्या लगता है, कौन सा मिडवीक में होने चाहिए? 1-1 and 1-2. Yeah, definitely. मतलब you want West Ham, you are expecting West Ham to win. I mean, I don't blame it because Bowen can show up. Bowen 1 goal 1 assist. Why not? मिडवीक भाई मतलब हाँ, एवर्टन वर्सेस वुल्व्स ये बहुत घटिया गेम होगा, बहुत घटिया गेम होने वाला है. दिस विल बी अ 0-0. मेरे को फील आ रही है. बट वुल्व्स बहुत बहुत गेम से कंसीड भी कर रही है, तो वो भी दिमाग में है. बट ये मिडवीक है. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. तो आई जस्ट गो फॉर 0-0. उसके बाद सिटी वर्सेस फॉरेस्ट. आई हैव रिको लुइस. रिको लुइस. नॉटिंघम फॉरेस्ट अच्छे फॉर्म में है, बट I see City finally getting a comeback here. So Haaland, I would say, Haaland getting a brace in this game week. Haaland getting a brace. 2-1 win for City. Finally, City coming back. Then Newcastle versus Liverpool में रिको भाई एक असिस्ट करने का क्या लोगे? हाँ डेफिनेटली लोगे. अगर मैं पढ़ रहा हूँ सही तो ये है. हाँ भाई रिको लुइस प्लीज कुछ कर देना, प्लीज प्लीज. इतनी मजदूरी करता है, प्लीज. ठीक है. न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल में जाते हैं. लिवरपूल बीइंग द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बेस्ट नहीं, वर्ल्ड नहीं बोल सकता, बेस्ट टीम इन द लीग, चैंपियंस लीग में भी टॉप. साला कुछ करेगा, बट साला डजंट हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड वर्सेस न्यूकासल. अब ये मत बोलो कि मैंने कैप्टनसी डिसाइड करते समय ये नहीं बोला, क्योंकि मैंने अभी ट्विटर में देखा. अब मैं झूठ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ वो आप सोचो. ठीक है. तो न्यूकासल, या आई थिंक लिवरपूल विल गेट अ विन. आई थिंक 2-1 win for Liverpool. It will be tough. It won't be easy. Isaac is a doubt, which is kind of favors Liverpool. I'll say 2-1 win for Liverpool. साउथहैम्पटन वर्सेस चेल्सी में जाते हैं. आई से 3-1 विन फॉर चेल्सी. चेल्सी को क्लीन शीट रखते हुए नहीं देख रहा मैं यहाँ पे, बिकॉज कोई ना कोई तो मार देगा आके. सो आई से 3-1 win for Chelsea. Hopefully something from Palmer. Arsenal versus Man United. I think historically a very good fixture. I think इसके लिए historically देखा जाए तो आप मेरे को बताओ. ये आई थिंक मैंने पूछा था सुयश और अबे से थोड़े वीक्स पहले, किस किस मैन यूनाइटेड प्लेयर का होम ग्राउंड होता था आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड फिक्चर? बताओ गाइस, कौन से पुराने यूनाइटेड प्लेयर का उसका बोलते थे कि वो उसका होम ग्राउंड है एमिरेट्स? बताओ.
मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि वो वेस्ट हैम में खेला था रिसेंटली, रिसेंटली। तो भाई कोई, भाई भाई जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा थोड़ा तो बताओ, थोड़ा तो बताओ, फिर से प्लीज प्लीज, फिर से क्वेश्चन बताऊँ क्या मैं? फिर से चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ, क्योंकि बेइज्जती हो रही है, बहुत बेइज्जती हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा परफॉर्म करता था जेसी लिंगार्ड। लिंगार्ड यूज टू परफॉर्म रियली वेल वर्सेस आर्सेनल, अ वेरी ट्रिकी गेम, बट अबे ने बोला था एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम, अबे ने बोला था एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम दैट मार्टिनेज एंड मेनू बोथ आर सस्पेंडेड, व्हिच इज ह्यूज। मतलब जॉनी इवेंट्स खेलने वाला है वर्सेस, मतलब इज गोना प्रोटेक्ट द विंग वर्सेस साका। एक मिनट, हाँ, तो या I'll say 2-1 विन फॉर आर्सेनल वर्सेस मैन यूनाइटेड। गाइस आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? प्रेडिक्शंस फॉर आर्सेनल वर्सेस, वन प्लेट मोमोज की शर्ट, या डेफिनेटली बताओ, डन। वन प्लेट मोमोज, सिर्फ एक प्लेट ब्रदर? अफगानी मोमोज की बात लगाते हैं शायद, अफगानी मोमोज, अफगानी। पोल, पोल करे क्या अभी, अफगानी मोमोज और तंदूरी मोमोज, व्हाट डू यू प्रिफर? यूनाइटेड वोंट स्कोर। आई थिंक, पता है यूनाइटेड का, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, और नए मैनेजर की बहुत तारीफ हो रही है, बट मेरे को स्टिल दे लुक रियली लीकी फॉर मी। मेरे को अभी भी दे डोंट लुक स्टेबल, मतलब दे हैव स्कोर्ड गोल्स बट दे स्टिल डोंट लुक स्टेबल फॉर मी। यूनाइटेड का आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट। आई विल गो विद 2-1 विन फॉर आर्सेनल, ट्रोसार्ड स्कोरिंग बोथ ऑफ देम। एस्टन विला वर्सेस ब्रेंटफोर्ड मत देखो, ये गेम बहुत बकवास गेम है, मत देखो। दोनों तरफ से बहुत ही बकवास गेम। तो बहुत ही, मतलब आस्टन विला तो मतलब मर मर के खेलेगी, ब्रेंटफोर्ड भी मर मर के, मतलब ब्रेंटफोर्ड कमबैक कर लेती है, वो एक चीज है, होपफुली एम्बोएमो कुछ कर ले। आई विल गो विथ आई जस्ट बिकॉज आस्टन विला इज एट होम, आई एम गोन, नहीं 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 यार, बहुत ही गंदे अभी आस्टन विला। I'll go with चलो 2-1 win for Aston Villa. Even though Brentford comebacks मारी है भर भर के, I'll go with 2-1 win for Aston Villa. Uh, he's trying, yeah, मतलब exactly, मतलब you cannot blame the coach too much as well. Agreed. लास्ट टू फिक्चर्स में आ जाता है, फुलहम वर्सेस ब्राइटन। दिस शुड बी अ गुड गेम, दिस शुड बी अ गुड गेम बिकॉज आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस, बिकॉज फुलहम एट होम इज अ लाइक रियली गुड टीम। फुलहम ने अच्छा परफॉर्म भी किया इस सीजन, मतलब द स्टार्ट इज नॉट बैड, जितना लोग, मतलब जितना मैं पहले उनको क्रिटिसाइज कर रहा था उतना एक्चुअली है नहीं, दे एक्चुअली डिसेंट। बट ब्राइटन को फर्क नहीं पड़ता, ब्राइटन इज लाइक वन ऑफ दोज, दे डोंट केयर हु द ओपोनेंट इज। सो आई गो विथ 2-2, I'll go with 2-2. Or I'll just go with 3-2 win for Fulham. Chalo, 3-2 win for Fulham. And the last fixture is एक मिनट में आगे तो नहीं बढ़ गया? हाँ नहीं बढ़ गया मैं आगे। लास्ट इज बॉर्नमथ वर्सेस स्पर्स। बॉर्नमथ वर्सेस स्पर्स में हमको लगता है टफ होगा, ये बहुत ही स्पोर्ट्स के लिए टफ होगा। I'll go with 2-2. I'll go with 2-2 because Bournemouth has been in great form, scoring a lot of goals in last few game weeks. Great result versus Arsenal as well. लास्ट गेम वीक में भी 3-4 गोल मारे हैं, तो I'll go with 2-2 because स्पर्स लीकी है बट कम बैक करती है, so I'll go with 2-2. So that is it for this game week, guys. Thank you for joining in. Thank you for liking as well. Wow, I mean, good likes, मतलब uh, 13 likes. Thank you, guys. Thank you so much for joining. Hopefully we all get good scores or good ranks. I mean midweek है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. Don't take your scores or ranks too seriously. तब तक के लिए हम मिलते हैं next game week में. Okay.